Hello everyone, good evening. Welcome to RAYACADEMY IAS, and in today's class we are going to cover up the weekly current affairs. April 1 ru he nathila, so April 1st to April 19 jaha bhi important current affairs thila, that will be covering today. Okay, लेट करवानी, ऑलरेडी लेट नाइट हो गलानी, तो टिके आमे जल्दी जल्दी सारिया पे चेष्टा करबा. इंपोर्टेंट टॉपिक्स अच्छी बिकॉज तमे देखिथिबो रिसेंटली जो न्यूज़ चली छी रिगार्डिंग द डिलिमिटेशन कमिशन, रिगार्डिंग वुमेन्स रिजर्वेशन चली छी. नरेंद्र मोदी भी गोटे स्पीच रे से रिसेंटली कहले से सब जिनस राइट. तो ये जिनसटा एग्जाम पर्सपेक्टिव रू भी बहुत इंपोर्टेंट और एमती भी फॉर एन लेमन ये जिनसटा ये टॉपिकटा इंपोर्टेंट भी. ओके, सो बहुत जन जानी नथिबे डिलिमिटेशन माने कौन, तो ता विषय टिके हमको जानिया को पड़िबो बिकॉज कंटिन्यूअसली दिस इज बीन इन न्यूज़. ओके, एंड इट इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट. ओके, कहीं देख एटा गोटे आर्टिकल मु तुमको देखौची. ओके, एटा 2 दिन तलर बधे काली किंबा पहर दिनर आर्टिकल. एटा भी गोटे आर्टिकल आसथिला हला, एंड एटा भी गोटे आर्टिकल माने लास्ट वीक रो एवरीडे जदि हम देखिबा गोटे पेज रे निहाती आसुची रिगार्डिंग डिलिमिटेशन. एंड ऑब्वियसली हम सिलेबस रे अछि जिनसटा पॉलिटी अंडर आसुची, सेति पे इंपोर्टेंट. तो घटना कौन हेची प्रथमे जानिबा हला. तो डिलिमिटेशन कमिशन एबे कौन पे माने ताको खारिज कर दिया गला हला, ताको माने सेटा डिफीट हे गला. डिलिमिटेशन कमिशन रो गोटे पार्ट हो जे तमरो वुमेन्स रिजर्वेशन बिल जोटा हला, वुमेन मानकर जो 33% रिजर्वेशन, दैट इज अ पार्ट ऑफ दिस डिलिमिटेशन. माने जदी डिलिमिटेशन टा पास हे जाय थांता देन ऑटोमेटिकली वुमेन्स रिजर्वेशन भी ता सहित पास हे जाय थांता. डिलिमिटेशन टा कोन बेसिकली देखो कि आगुरु कौन होथला, बहुत आगुरु माने मु 1976 पूर्व कथा कहूची. 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो आस्थिला ता पूर्वरु कौन हेथिला, पॉपुलेशन हिसाब रे माने गोटे स्टेट रो पॉपुलेशन हिसाब रे लोकसभा रो सीट्स गुडा को फाइनलाइज करा जाउथला अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन ऑफ ए पर्टिकुलर स्टेट. ओडिसा रो पॉपुलेशन केते थिबो सेही हिसाब रे सेति की लोक को रिप्रेजेंट करिया पे केति की लोकसभा सीट दरकार और केतेटा एमपी दरकार. ओके, सेही हिसाब रे हमरो होथला. बट 1976 परे ए जिनसटा चेंज करा गला एंड हमरो जो लोकसभा सीट फिक्स करा जायथिला. इफ यू कैन जस्ट टाइप कि लोकसभा रो सीट वर्तमान हमरो केते फिक्स करा जायछि, सेटा है सेबिठु एबे पर्यंत चली की आसीछि हला. ये माने ये कुआ गला कि बाय 2000 पॉपुलेशन गोटे स्टैग्नेंट हे जिवो, तो से हिसाब रे हमको बढ़ेवा को पड़िबनी. एंड 2002 रे आउट अमेंडमेंट आछला जो थरे एटा कुआ गला कि नेक्स्ट सेंसस 2026 रो नेक्स्ट सेंसस जहा हबो तार बेसिस रे पार्लियामेंट चाहिले ए जो पर्टिकुलर फिक्स्ड सीट अछि लोकसभा रो व्हिच इज तमन तो कहलोनी व्हिच इज 550. ओके, ए लोकसभा सीट्स जोटा 550 रे हमें फ्रीज कर दिएछु 2026 रो पर सेंसस परे ए जिनसटा चेंज हे थांता. वर्तमान जो सेंसस अछि माने हबारो अछि एटा होचे 2021 रो सेंसस. प्रति 10 वर्ष रे सेंसस हबा कथा, बट 2021 रे कोरोना पे हमर सेंसस हे पारि नथिला. तो एबे जो सेंसस टा अछि 2026 27 जहा भी तमे देखुछो, this is 2021 census. But according to the previous amendment हमरा एटा कुहा जायथिला कि 2026 परे जहा भी हमर सेंसस आसीबो तार डाटा को मध्यनजर रखी कि जिनसटा चेंज करा जिवो. ओके, तो एथि पे ए जिनसटा को ये हेथिला ना. ए जो पर्टिकुलर जिनसटा हेछि माने इंट्रोड्यूस करा हेछि बिल, सेथरे तमरा सदर्न स्टेट्स माने राजी होनांती हला. सदर्न स्टेट्स माने काहे कि राजी होनांती, बिकॉज़ ऑब्वियसली तांको पाखरे किछि ना किछि गोटे प्रॉब्लम तांको पई किछि गोटे प्रॉब्लम एटा करूथबो.
हैला तो देखो कौन प्रॉब्लम हे पारे जस्ट एटा देखो ओके एटी देखि पारछ करंट लोकसभा सीट्स वर्तमान 550 अछि अकॉर्डिंग टू द प्रपोज्ड बिल ए 550 टाकू तमरो 850 करिवार प्रोविजन थिला 550 हमर फ्रीज हे कि अछि वर्तमान लोकसभा सीट आको 850 करिवार थिला आउट ऑफ दिस 850 तमे जदि एठी देखिबो एई सब राज्य पय एई गुडा को प्रॉफिटेबल हे पारे हैला सेमान को पय भलो हे पारे जो गुडा को नॉर्दर्न स्टेट्स अछंदी उत्तर प्रदेश बिहार राजस्थान मध्य प्रदेश महाराष्ट्र केमिति देखो करंट सीट्स तांकर एतिकी अछि जदि ए बिल टा पास हे जाय देन तांको सीट्स बढ़ी जाउची टू 140 बिहार रो 40 सीट्स एट प्रेजेंट अछि जदि ए बिल टा पास हे जाउची बिहार रो लोकसभा सीट बढ़ी की 73 हे जिवो सिमिलरली राजस्थान रो 48 मध्य प्रदेश रो 51 महाराष्ट्र रो 48 वर्तमान अछि 79 हे जिवो ओके जदि बिल टा पास हुए तो एमाने तो प्रॉफिट रे अछंती राइट बट कहा पे एटा असुविधा इवन ओडिसा पई भी एटा असुविधा बिकॉज ओडिसा रे वर्तमान 28 टा सीट्स अछि लोकसभा पे जदि जेटा जिनसटा पास हे जाए एटा तमरो चेंज हे जिवो केते 29 टा हैला तो परसेंटेज इंक्रीज बेसी होची की बेसी होनी एमानो को ही फायदा होची बट तमे जदि तमिलनाडु कथा देखिबो 39 थिला तांगर 51 होची पाखा पाखी तमरो एतिकी परसेंट ही ग्रोथ तमरो देखिया को मिलुची हैला सिमिलरली केरला रो बेसी सीट्स बढ़ुनी 3टा खंडे सीट्स बढ़ुची एठी केते ह्यूज नंबर रे सीट्स बढ़ुची एठी तमे देखुचो केते कम नंबर रे सीट्स गुडा को बढ़ुची हैला तो ए स्टेट्स मान को पई खास करी के जो पूरा एंटायरली सदर्न स्टेट्स अछंती से मान को पई एटा प्रॉब्लम सेति पे से माने राजी हो नांती एंड सेति पई तमे जदि देखिबो 298 जण इन फेवर रे रहिथिले बिल रो वेरेस अगेंस्ट 230 थिले हैला एंड हमको रिक्वायर्ड मेजॉरिटी केते दरकार गोटे बिल टा पास हबा पई 2/3 मेजॉरिटी निहाती दरकार जेते कि जण प्रेजेंट अछंती 528 जण प्रेजेंट थिले वोट करथले तारो 2/3 हमको मेजॉरिटी दरकार व्हिच इज 352 मेजॉरिटी दरकार थिला बट केते जण वोट फेवर रे वोट करचंती 298 तो हेंस एटा तमरो डिफीट हे गला ओके एंड आ सहित ही जदि एटा हे थांता देन वुमेन्स रिजर्वेशन ता भी इंप्रूव हे थांता बट जेहेतु एटा पास हलानी इनडायरेक्टली हमरो वुमेन्स रिजर्वेशन बिल ता भी पास हला नहीं क्लियर ओके अच्छा so the union government has introduced 3 major bills 3 major bill constitution bill which is your 131st amendment bill delimitation bill and the union territory law okay to enable fresh delimitation basically 550 जो सीट्स अछि लोकसभा रो ताको चेंज करिकि 850 सीट्स करा जाऊ सेटा कुहा जाई छी बिफोर द सेंसस based on 2011 census हैला based on 2011 रो सेंसस डाटा हिसाब रे एटा करा जाऊ छी बट जदि हमें प्रीवियस अमेंडमेंट गुडा को देखिबा ता हिसाब रे 2026 परर जो सेंसस हबा कथा ता बेसिस रे तमे एटा चेंज करि परिबो एबे करि परिबो नाही ओके अच्छा so the government has introduced 3 bill to enable fresh delimitation data using recent census data to 850 seats lok sabha seat को expand करा जिवो and 33% reservation सेथरे रहिबो वुमेन मान कर obviously जदि सीट्स बढ़ुची वुमेन मान को पई भी जगह मिलिबो ओके सो गोटे नुआ delimitation commission गठन करा जिवो that will redraw constituencies and allocate seats with its decision being final and legally binding etc अच्छे सो ए जिंसो करियर मेन कारण कोन वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू तो कौन होची बेसिकली फेडरलिज्म कथा मु तुमको बारंबार तो कहि छी फेडरलिज्म रो माने बुझै छी
तो ये जो जिनसटा हबो इज इट ए थ्रेट टू फेडरलिज्म इन अ वे हाँ कि नहीं इज इट ए थ्रेट टू फेडरलिज्म इट मे बी बिकॉज गोटे 25 लक्षर प्रॉब्लम गोटे एमपी माने शोकेस करि परिबो कि बुझी परिबो कि कन्वे करि परिबो कि सो दैट इज अ क्वेश्चन ओके सो खास करके जो माने सदर्न एरिया रो एमपीज माने अछंती सेठी तमरो एटा प्रॉब्लम हे पारे ओके एटा हम ऑलरेडी देखिलु तो जदि तमे देखिबो करंट तमरो नॉर्थ और साउथ जदि मु देखिबी साउथ रे देखो साउथ रे वर्तमान तो 20.1% अछि बट एटा इंप्रूव हैला परे तमरो नॉर्थ रे बढ़ी जिवो बट साउथ रे तमरो कमे जिवो हैला प्रोपोर्शन ता सेति पे साउथ रो जो माने लीडर्स माने अछंती से माने मना करछंती के एटा पास न होबा दरकार ओके सो ये जिनसटा ऑलरेडी हमें पढ़िलु कि जदि एटा चेंज होउची 550 रु 850 से 850 रु भी तमरो 815 स्टेट्स रो रखिबे and 35 seats will be from the union territories okay and ए जिनसटा जदि चेंज हुए हमें को आर्टिकल टा चेंज करिबा हमें आर्टिकल 81 चेंज करिबा आर्टिकल 81 रे ए जिनसटा लिखा हेची कि देयर विल बी 550 सीट्स रिजर्व्ड फॉर द लोकसभा जोटा कि चेंज हबो तो आर्टिकल 81 हमको मन रखियार अछि आर्टिकल 81 चेंज हबो जदि ए बिल टा पास हुए कि हेई थांता जदि बिल टा पास हेई थांता okay so article 81 dictates the principle of equal representation ratio between a state's allocated seats and its population must be roughly the same across all states हैला proportion टा सेम हवा दरकार उत्तर प्रदेश रो सीट जति की ओडिसा रो सेती सीट्स हे परिबोनी बिकॉज़ उत्तर प्रदेश रो पॉपुलेशन अधिका तो तांको पॉपुलेशन हिसाब रे तांको सीट्स बढ़िबो एमिति नुह कि जार पॉपुलेशन कम अछि तार ताकू गोटे माने डिमेरिट भला एटा लागू बुझि परछ तो ए जिंसटा को भी चैलेंज करिवो बट जदी बिल टा पास हे जाय तो रिमूविंग द डिलिमिटेशन फ्रीज द बिल आल्सो अमेंड्स द मार्जिनल हेडिंग ऑफ आर्टिकल 82 फ्रॉम द रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस ओके to readjustment of constituencies and removes the requirement of readjusting the number of Lok Sabha seats in states after every census. Census तो है ही नहीं 15 वर्ष हेलानी हमें आ कौन census कथा देखिबा एठी छड़ा ओके अच्छा ए जो आर्टिकल 81 रो क्लॉज 2 और क्लॉज 3 अछि हला सेतो बळे जो लोकसभा रो सीट्स गुडा को फ्रीज करा जायतला दैट वाज बेस्ड ऑन 1971 सेंसस राइट एंड द असेंबली सीट्स को फ्रीज करा गला 2001 सेंसस परे ओके एंड कोआ जायतला कि 2026 परे जो सेंसस हबो ता परे जिंसटा चेंज करा जिवो ओके जदि बिल टा पास हे जाय थांदा आर्टिकल 334 ए बी अमेंड हे थांदा ओके बिकॉज़ सेथरे तमरा 33% वुमेन मन को रिजर्वेशन मिली थांता लोकसभा रे एंड स्टेट असेंबलीज बोथ ओके जोटा तमे सुनो तो भाई नाटा बहुत सुनी छ तमे नारी शक्ति वंदन अधिनियम ओके कॉन्स्टिट्यूशन 116th amendment act एटा भी चेंज हे थांता 33% रिजर्वेशन मिली थांता right after the new delimitation process is completed okay अच्छा को मेजॉरिटी दरकार गोटे कॉन्स्टिट्यूशन बिल ये जो 31st amendment बिल आपको स्पेशल मेजॉरिटी दरकार पास होबा पे as I already said कि 2/3 मेजॉरिटी दरकार 2/3 मेजॉरिटी मिली पारिला नहीं सिमिलरली सेम जिंस तमे एटा को डिलिमिटेशन टा को वुमेन्स रिजर्वेशन टा को दीटा को तमे लिंक करि परिबो हला स्पेशल मेजॉरिटी एटा जदी हेई थांता सेटा हेई थांता दीटा जको इंटरलिंक दैट इज अ पार्ट ऑफ द डिलिमिटेशन एज वेल ओके एंड मु तुम कहली कि जदी बिल टा पास होंता ओके देन तमरो डिलिमिटेशन एक्ट गोटे अछि 2002 रो सेटा रिप्लेस हे थांता आ गोटे डिलिमिटेशन नुआ
डिलिमिटेशन कमिशन सेटअप ही था ओके एंड से सेटअप रे माने जो कमिटी ही था दैट ताको हेड किए करथांते सुप्रीम कोर्ट रो जज एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर से मान को ये सब पावर दिया ही था ओके अच्छा तो बहुत सारा जिनस अच्छी ऑलरेडी आम कहलु कि नारी शक्ति वंदना दिए नियम टा पे हो पारानी बिकॉज थैंक्स टू द डिलिमिटेशन कमिशन सेटा ये गला तो यहाँ भी ये गला ओके अच्छा जो कि तमे देखि भाषण प्रधानमंत्री मोदी बहुत दुखित फील करथिले ओके ठीक अच्छे ये जिनसा मुझे तुम कहती कि 1976 रो जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट थिला सेथिरे तमर 1971 सेंसस रो डाटा को यूज करिकी 550 लोकसभा सीट्स टाको फिक्स कर दिया जाइथिला हला तापरे 84th अमेंडमेंट एक्ट एटा ए एक्ट गुडा को मन रखिबा हमें ओके 84th अमेंडमेंट एक्ट 2001 रे से फ्रीज टाको एक्सटेंड करिकी माने एक्सटेंड करा गला on the total number of seats until the first census after 2026 हैला तो ए 84th amendment act हिसाब रे 2026 सेबेटा करा जिथिला 2001 रे जिनसटा लेखा जाइथिला से अमेंडमेंट रे कि 2026 परे जो सेंसस हबो से पर्यंत तमरो ए 550 टा फिक्स रहिबो एबे सेटा हेइ छि कि एबे हेइ नि सेटा राइट Is there a need for balanced representation formula instead of strict population based allocation? Absolutely yes. Absolutely yes. Satish Kumar Sethi सेइथिपै ना असुविधा होची ना सेइथिपै तो जिनसटा पास ही परलानी एबे तमे पॉपुलेशन कंट्रोल करिया पे भी कहउछ बहुत सारा जगह रे तो जदी गोटे स्टेट तार पॉपुलेशन कंट्रोल करूची देन सिट डिमेरिट हे जीव ना ताकू सेतिकी प्रपोर्शन रे ता पई सीट्स रहिबनी तो ऑब्वियसली हमको गोटे नुआ फार्मूला बाहर करिया को पड़िबो वेयर पॉपुलेशन को न देखि कि हमको गोटे बैलेंस रिप्रेजेंटेशन फार्मूला निहाती दरकार ओके अच्छा while the 2002 commission redrew internal boundaries within states the interstate allocation of seats remains based on the 1971 data okay acha in the Kishore Chandra Changanglal Rathod case of 2024 Supreme Court kahithile an order by the Delimitation Commission can be reviewed if it is clearly arbitrary and violates the constitutional values okay acha to kon arguments against अछि ए बिल रो आ कौन फॉर रे अछि सेटा टिके हमें देखिबा जदि हमें अगेंस्ट कौन आर्गुमेंट अछि देखिबा तो फर्स्ट हला पेनलाइजिंग डेमोग्राफिक सक्सेस सदर्न स्टेट्स आर्ग्यू करछन्ते कि दे आर इफेक्टिवली बीइंग पनिश्ड फॉर सक्सेसफुली इंप्लीमेंटिंग द सेंटर ऑफ फैमिली प्लानिंग एंड पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसीज एज आई ऑलरेडी सेड सेंटर कहूँ कि तुम पॉपुलेशन कंट्रोल कर तुम फैमिली प्लानिंग एजेंडा गुड़ाक स्प्रेड कर तो सेटा कले तो कौन सेंटर कथा माने कि गोटे स्टेट पॉपुलेशन कंट्रोल करुची तार पॉपुलेशन ग्रोथ होनी एंड से तार लोकसभा सीट्स कमी जाउची ओवर द लास्ट 50 इयर्स से जिनसटा से करी आछि जोटा कि तार एबे पनिशमेंट तक गोटे मिलला भलिया होची सो दैट इज नंबर 1 अगेंस्ट आमे कहि परबा डिलिमिटेशन कमिशन रो प्रथम argument against the particular bill. So their population growth has slowed significantly compared to the northern states. Delhi, Bihar, ये सब जगह तो population बढ़ुची, right? But जब मैं तम यदि southern states को देखिबो सेठी population कमुची. Okay? तो निहाते सेमान को बाय एटा उठे injustice हबो absolutely. अच्छा, आउ कोन loss of political representation.
If seats are redistributed purely on the 2011 population data, the proportion of seats held by the southern states in the Lok Sabha will shrink, as I said. Hela southern states manakara political representation kami jibo. On the other hand, northern states manakara representation bahut badhi jibo. Uttar Pradesh share could rise from 14.73% to over 16%. Kerala's share would shrink from 3.68% to 2.7%. देखि पार्छ डिफरेंस. एंड तमिलनाडु कथा जदि आमे देखिबा 7% रु 5% पाखापाखि तमरो एटा कमी जीवो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन. ओके, प्लस इम्पैक्ट ऑन द प्रेसिडेंशियल इलेक्टोरल कॉलेज. ए जे फिगरटा तमे देखुछ ना पड़ गला, जस्ट अ सेकंड. ए जे फिगरटा देखुछ ऑरेंज कलर रो सिंबल्स गुडा देखुछ, दिस आर एनडीए रूल्ड. सबु गेनर्स माने कि कोठी अछंदी, एनडीए पार्टी सब कोठी अछंदी गेनर्स रो लिस्ट रे. वेरएस एठी बस ओडिसा ही हमर गोटे ऑरेंज कलर रे अछि. एटा तमे आंध्र प्रदेश तेलंगाना मिक्स्ड ही अछि, बाकी तमे सब देखि परतबो दिस आर अदर पार्टीज. हला तो कहा पे पॉलिटिकली जदि तमे देखिबो कहा पे पॉजिटिव कहा पे नेगेटिव तमे एठी देखि परतबो, डिफरेंस बुझि परतबो. मते किछि कहिबा दरकार नै एठी. एम आई क्लियर? अच्छा, सो प्रेसिडेंशियल इलेक्टोरल कॉलेज गोटे एमपी रो वैल्यू, एमपी रो वोट रो वैल्यू और गोटे एमएलए रो वोट रो वैल्यू चेंज हो जिवो प्रेसिडेंट रो इलेक्शन टाइम रे. नॉट ओनली प्रेसिडेंट इलेक्शन, जे कोनो सब डिसीजन पार्लियामेंट निया हबो सेटा कहा फेवर निया हबो तमे निजे भाबो. ओके, if delimitation alters the number of MLAs and MP, the fundamental arithmetic of the electoral college will change. Okay, this raises constitutional questions about whether northern states will gain a disproportionate unilateral say in electing the president. माने जो टॉप गेनर्स रो लिस्ट माने देखिलो से स्टेट्स माने ही बेनिफिट रे रहिबे, से माने ही इनडायरेक्टली हमर प्रेसिडेंट को इलेक्ट करूछन बिले हम कहि परिबा. सदन मानकर किछि रिप्रेजेंटेशन ही रहबानी. एंड से भितरे हमर ओडिसा भी अछि. ओके, ओडिसा भी अछि से भितरे. लेट्स सी कोन होछि. assault on federalism, obviously critics कहउछन्ती कि this acts as a backdoor method to centralize the political power. It allows a political party to dominate national politics merely by sweeping a few densely populated northern states, rendering the electoral will of the south largely irrelevant. है ना, बुझी पार्थो obviously कि सब पावर हमें इनडायरेक्टली सब नॉर्दर्न स्टेट्स को दे दोछु. नॉर्दर्न स्टेट्स रे को पार्टी फेवर रे अछि, एनडीए फेवर रे अछि, तो ऑब्वियसली हम गोटे पार्टी आडू को बायस्ड हे जाउछु, आ गोटे पार्टी पय हमें पूरा ही ता पय गोटे नेगेटिव माने डिस्टेंस हम एठी नउछु. ओके, तो एटा बहुत ही भूल हबो. वी हैव टू कम विथ अदर माने आ गोटे किछ गोटे उपाय हमको भाबिया को पड़िबो. अब फॉर रे कोन कोन आर्गुमेंट्स अछि, माने जो माने भी फेवर रे सपोर्ट करथिले माने वोट करथिले से माने कोन कहउचंती द कोर प्रिंसिपल ऑफ अ डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू. जदि तमे एते वर्ष हलानी गोटे जिंस फ्रोज हेकी अछि, ए फ्रोजन डिलिमिटेशन मींस एन एमपी इन उत्तर प्रदेश करंटली रिप्रेजेंट्स मिलियन मोर सिटीजन देन एन एमपी इन केरला. एटा भी ठीक गोटे आडू, बिकॉज हम एटा फॉर रो कथा देखुछु कि गोटे महाराष्ट्र रो किंबा मध्य प्रदेश रो किंबा बिहार रो सेठी जो गोटे एमपी थिबो से बहुत मिलियन ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करूची, वेरेस केरला रो ओडिसा रो जी एमपी थिबो से बहुत कम लोक को रिप्रेजेंट करूची. तो ए डिस्प्रोपोर्शनेट भी हमको देखिया को मिलुची. ओके, absolute seat increase. The center has clarified that under the expanded 850 seat house, no state will lose its current absolute number of seats. कि lose करिवनी बिले center एटा promise करिछि अवश्य. Okay, in fact, all states are projected to
see roughly a 50% increase in the total seat count. Tamil Nadu 39 ru 58 ku move habo. So these are the points for the bill. Okay. Facilitating women's reservation. It is सबुठु important थिला. 33% women आकु नेकी politics वर्तमान होची. तो 33% women's quota भी मिली थांता without drastically shrinking the pool of general seats available for the existing political representatives. एबे कौन होची कि 550 रु ही तमे women पाई 33% fix करिबाटा सहज ना जदि तमे 850 कर दोचो then women मन को पाई 33% करिबाटा सहज obviously it is सहज but that should not be on the stake of माने गोटे आउट स्टेट रो डिमेरिट हे जाऊ से हिसाब रे हमको देखिया को न पड़ो am I clear okay मु किछ एपट सेपट गपुची or am I clear what I am trying to say okay now that you have understood delimitation try to answer this 2024 रो PYQ okay UPSC रे पचार थिला how many delimitation commissions have been constituted by the government of India till December 2023 गुरु प्रसाद 33% वुमेन रिप्रेजेंटेशन बहुत थर पार्लियामेंट रे फेल हे आसी हला पास हे पारुनी गॉड नोस कोन टाइम बट सेटा पास हे पारुनी सो लेट्स सी कोन होची एबे आंसर करो एटा ऑलरेडी हमें 30 मिनिट्स डिस्कशन कर देलो डिलिमिटेशन विषय रे आउरी अछि बहुत सारा टॉपिक्स आंसर करो how many delimitation commissions have been constituted by the government of India till December 2023 1 2 3 4 जल्दी ओके देखो यस सो वर्तमान पर्यंत माने डिसेंबर 2023 कथा पचार थिला चारि थर 1952 रे 1963 रे 1973 रे आ 2002 रे चारि थर हमर डिलिमिटेशन कमिशन सेटअप हेतला एटा गोटे PYQ थिला सो इंपोर्टेंट हे जाउछ गुड ओके अच्छा एटा गोटे तमर एठी आरो नै परिबो फोटो तमको तो PDF भी मिल जेबो सिंपली गोटे फ्लो चार्ट माध्यम ने शो करा हिची कि केते प्रकार हमर मेजॉरिटी अछि ओके एंड मु तुमको ऑलरेडी कहली कि स्पेशल मेजॉरिटी दरकार थिला ए बिल ता को पास करिया पे स्पेशल मेजॉरिटी माने 50 मोर देन 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप आउ मेजॉरिटी ऑफ 2/3 मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग तो 352 टा हमको वोट्स दरकार थिला जोटा कि मिली परिला नहीं एंड सेति पय ए पर्टिकुलर बिल ता तमरो पास हे परिलानी ओके अच्छा नेक्स्ट जीवा देखो Odisha kicks off India's first 3D chip packaging plant. कोठी इची कोई परिबो? Can anybody say? कोठी इची? India रो प्रथम 3D chip packaging plant. कोठी इची? एटा तमरो Info Valley Bhubaneswar. एठी इची, हेलो? Odisha has marked a major milestone in India's technology sector with the establishment of the country's first advanced 3D chip packaging manufacturing unit at Info Valley Bhubaneswar. Okay, तो वन लाइनर निहाती पचारि परिबो कि कोठी सेटअप हेछि इंडिया रो फर्स्ट सब जिंस हम पे इंपोर्टेंट राइट सो ओडिशा becomes the first state in India to host an advanced 3D semiconductor chip packaging unit placing the country in the global advanced chip manufacturing ecosystem. The facility will start commercial production
by August 2028 commercial production से 2028 रे आरंभ करिबो sorry and is expected to be fully operational by 2030. Okay, so it aligns with the India's semiconductor mission and strengthens the goal of making India Atmanirbhar in chip manufacturing. So chip गुड़ा को आमे आगुरु जो import करथुलु एबे आमे निजे manufacture करि परिबा ओडिसा रे ही manufacture करिबा भुवनेश्वर रे ही आमे manufacture करिबा. ओके एति जान तो बस. नेक्स्ट देखिबा साउथ चाइना सी रे गोटे असुविधा चली गोटे तुम डिस्प्यूट चली एनी आइडिया कही जियोग्राफिकली लोकेशन जदि तुम काली सॉरी काली कहूँ मु रविवार एसएससी सीजीएल देखिबो क्वेश्चन पचरा जाइथिला कोन कि तुम स्टेट ऑफ हॉर्मस न्यूज रे थिला स्टेट ऑफ हॉर्मस को दीटा ओशन भितर लाई करूची को दीटा वाटर बॉडी भितर लाई करूची जोटा आमे मैप रे ऑलरेडी पढ़ी थिलु हां कि नहीं जदि पढ़िनु तमे मते को हला बहुत सारा क्वेश्चन एमती थिला मु खाली गोटे एग्जांपल देली तो जे कोनो से भी जियोग्राफिकल जगहटा न्यूज रे अछि देन तारो मैप है हमको टिके स्टडी करिया को पड़िबो साउथ चाइना सी रे वर्तमान प्रॉब्लम चलछि तो देखिबा कोन प्रॉब्लम ओके वेयर इज दिस साउथ चाइना सी बाय द वे एटा हला तमरो चाइना चाइना रो साउथ रे ही साउथ चाइना सी एठी तमरो गोटे अछि स्कारबोरो शोल हला अच्छा एटा तमे जति देखिबो दिस इज फिलीपींस एटा तमरो फिलिपाइन एटा हला तमरो चाइना डिस्प्यूट ता को देश मध्य रे अछि इट इज बिटवीन चाइना एंड फिलीपींस चाइना कोची ए जो पर्टिकुलर शोलटा अछि चाइना कोची एटा तार एरिया अंडर रे जाउची फिलीपींस कोची एटा ता एरिया रे जाउची हला एटा चाइना रो तमरो 9 डैश लाइन तम एठी देखि परथो जेहेतु एटा से लाइन बिलोंग भितरे एटा जाउची तो चाइना कोची एटा हमरो एंड फिलीपींस भी कोची एटा हमरो बिकॉज़ दिस इज द क्लोजेस्ट टू द फिलीपींस हला निहाती यार बहुत सारा पॉजिटिव्स थिबो सेति पे दीटा कंट्री आपे माडगोड़ लागुछन जेमति आमे कश्मीर पे माडगोड़ लागुछु सेम ओके नाउ ए जो स्कारबोरो शोल होची गोटे एटॉल माने कोन जानछो जदी जानिछ मते कमेंट को एटॉल माने कोन बुझुछो तमे एटॉल माने कोन एटॉल होची वर्तमान एटा हला स्कारबोरो शोल होची गोटे एटॉल in the South China Sea claimed by both China and Philippines and तमे जदि देखिबो I think even Taiwan भी ताकू कोन ओडे लागि छी छरा चाइना रे ताकू कुहा जाय ह्यूंगन आइलैंड चाइना रे ताकू कुहा जाय ह्यूंगन आइलैंड आउ तमरो फिलीपींस ताकू कुहे पानाताक शोल और बाजो दी मासिन लोक okay it was named for the HMS Scarborough, which is an English ship chartered by the East India Company that struck the atoll. हला से atoll को बाड़ेइतला. By the way, atoll कथा कौन कहलो? Atoll होची गोटे ring shaped coral leaf. Ring shaped island हमें कहि परिबा गोटे ring shaped island ए भितरे तमरो lagoon type रो structure हेकी थिबो. हला तो आकु हमें कहू atoll. Okay? Yes. It is the largest atoll in the South China Sea. South China Sea रो सबुठु बड़ atoll तमे जदि देखिबो that is Scarborough Shoal. Okay? Because पाखापाखी 150 square kilometer area से cover करे which includes a shallow navigable lagoon ता भीतर गोटे lagoon थाए. Most of the atoll is submerged at high tide but several rocks most prominent of which is the South Rock remain above water. हैला तो लोकेशन टा खास करके जानो तो कौन एठी सब आइलैंड अछि पारासेल आइलैंड अछि स्प्राथली आइलैंड अछि एंड ता मझिरे तमरो एटा रहिला स्कारबोरो शोल ओके चाइना फिलीपींस एठी रहिला तमरो ब्रुनेई दिस इज योर वियतनाम एम आई क्लियर ओके एठी रहिला हमरो पैसिफिक ओशन ओके जियोग्राफिकली मैप गुडा को माइंड रे पूरा प्रिंट हे के रहि जबा दरकार नेक्स्ट देखिबा हमें
अच्छा बेसी डिटेल को जीवानी सेती टाइम हम पाखरे नाही चाइना क्लेम करूची केटा तारो historical claim stating that they can trace their own ownership of the area back to the Yuan dynasty in the 1200s आ फिलिपिन क्लेम करूची जियोग्राफिकल बेसिस रे तो हिस्टोरिकल बेसिस रे चाइना क्लेम करूची आ फिलिपिन्स जियोग्राफिकल बेसिस रे because it is much closer to the Philippine main island of Luzon which contains the capital Manila. Okay, Philippine capital Manila which is in the island Luzon and एटा बहुत Luzon रो बहुत पाखरे तमरो ए पर्टिकुलर Scarborough shoal अछि तो जियोग्राफिकली फिलिपिन्स एटा कहूची. ओके आ जदी तमे देखिबो जियोग्राफिकली जदी देखिबो चाइना रो तो 500 माइल्स दूर रे अछि ए एटॉलटा. Okay, it is considered within the Philippines 200 nautical mile exclusive economic zone based on 1982 United Nations Convention of the Law of the Sea. Okay, and there are no structure built on the Scarborough shoal. हैला किछि भी structure built हेनी but China कौन करिछि ताको कंट्रोल रे पूरा रखिछि. constant coast guard presence तमरो 2012 रु सेठी देखिबा को मिलिछि. ओके चाइना रो commercial significance निहाते थिबो. the surrounding waters have rich fishing grounds and the seabed is believed to hold substantial mineral resources. एबे mineral केते important हमें जाने थिबा तो बहुत important mineral resource हमरो सेठी अछि including petroleum and natural gas. ओके तो सेठी पे माने माडगल लागे कि अछंती. ओके ए न्यूज़ ता जानि थिबो आई होप सो कि तमरो जस्टिस वर्मा रिजाइन कर देले जानछो ना नहीं. जानछो जस्टिस वर्मा रिजाइन कर देले. ओके तो ऑलरेडी हमें रिमूवल ऑफ जज रो प्रोसीजर टाको डिटेल रे पढिछु. अगेन मु तुमको इटा गोटा रिवाइज करया भलिया करछि हला एही हिस्सा हम ऑलरेडी पढिछु. पूरा प्रोसेस ता कोन गोटे जज को रिमूव करया पे मु इम्पीचमेंट वर्ड यूज करूनी बिकॉज़ जनरली करा जायनी बट क्वेश्चंस पचला बेलको सेही जिनसरा करती जाय. तो प्रथम हैला मोशन टाको इनिशिएट करा जिवो. इम्पीचमेंट मोशन इनिशिएट करा जिवो इन एदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. लोकसभा रे भी इनिशिएट करा जे परिबो राज्यसभा रे भी इनिशिएट करा जे परिबो. जदी लोकसभा रे करा होची देन केते जण साइन करथिबा दरकार 100 मेंबर्स साइन करिबा दरकार आउ स्पीकर को दबा दरकार. जदी राज्यसभा रे मोशन टा इनिशिएट होची देन 50 मेंबर साइन करी के ताको चेयरमैन को देबे. ओके सो स्पीकर किंबा चेयरमैन से माने चाहिले कोन करि परिबे डिसाइड करिवे कि ताको एडमिट करा जाय परिबो किंबा रिजेक्ट करि जाय परिबो. ओके देन तापर कोन हला मोशन इनिशिएट हला पर गोटे इंक्वायरी कमिटी पठा जिवो. इंक्वायरी कमिटी रे केते जण मेंबर थांती 3 जण मेंबर थांती. 3 जण मेंबर थांती कॉन्स्टिट्यूटेड बाय स्पीकर और चेयरमैन. इट इंक्लूड्स ए सुप्रीम कोर्ट जज हाई कोर्ट रो चीफ जस्टिस आउ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट. ए 3 जण डिसाइड करंती आउ तमरो चार्जेस फ्रेम करंती आउ इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करंती. ओके थर्ड स्टेप हला रिपोर्ट. तो ए जो कमिटी हेइथिला से कमिटी तांकर रिपोर्ट सबमिट करिवे कहा को जदी लोकसभा इनिशिएट करा हिची स्पीकर को जदी राज्यसभा इनिशिएट करा हिची देन चेयरमैन को. ओके जे प्लेस करथिबा तांको ये रिपोर्ट ता सबमिट करा जिवो. तापरे पार्लियामेंट ताको कंसीडर करिवो. इफ रिपोर्ट रे किछि जदी भी तमरो misbehavior or incapacity देखा गला then मोशन टाको आगु को निया जिवो. जदी नाही देन सेठी रखी माने ऑब्वियसली सेठी रह गला. वोटिंग रिक्वायरमेंट मोशन मस्ट बी पास्ड in each house by majority of the total membership and majority of at least 2/3 of the members present and voting. Okay तापरे गोटे हाउस रे पास हला परे आ गोटे हाउस को जीवो. लोकसभा पास है कि राज्यसभा को जीवो कि राज्यसभा पास है कि लोकसभा को आसीबो. तापरे फाइनली
दीटा हाउस अप्रूव कला परे मोशन टाको प्रेसिडेंट पाखो को पठा जिवो एंड तापर तमर जज टा रिमूव हे जिवो वर्तमान पर्यंत सेमति किछि हेछि कि इज एनी जज रिमूव्ड फ्रॉम इट्स ऑफिस टिल नाउ कहलो ए पर्यंत सेमति किछि तमे केस देखिछो कोनोसे भी जज को हम रिमूव करिछु एमती मेथड रे इम्पीचमेंट हेछि कि डिस्टिंग्विश्ड जजेस किए हेबे सेटा सेमाने डिसाइड करिवे ओके चीफ जज अछंती सुप्रीम कोर्ट जज अछंती सेमाने सब डिसाइड करिवे किए रहिबे तमर डिस्टिंग्विश्ड जजिस्ट सो दिस इज द प्रोसीजर ए प्रोसीजर ता हम कोर्ट आनथिलो जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 अंडर द प्रोसीजर ता मेंशन अछि ओके तो मोशन 100 एमपी साइन करिवे लोकसभा रे और 50 एमपी साइन करिवे राज्यसभा रे हला तापरे स्पीकर को पाखो जीवो किबा चेयरमैन पाखो को जीवो दे मे एडमिट दे मे रिजेक्ट देन तमरो इंक्वायरी कमिटी पठा जीवो 3 मेंबर कमिटी तापरे तमरो इन्वेस्टिगेशन हबो हला जदी एठी किछि प्रूफ हला ने एठी प्रोसेस टा एंड करा जीवो जदी किछि भी देखा गला देन अगेन एटा पार्लियामेंट रे अप्रूवल पे आसीबो दीटा हाउस रे पास हबा दरकार स्पेशल मेजॉरिटी वोट रे पास हबा दरकार तापरे प्रेसिडेंट पाखो को जीवो एंड प्रेसिडेंट फाइनली रिमूवल रो ऑर्डर दबो ओके यस ए पर्यंत केबे भी एमती बहुत केसेस हेछि बट इम्पीचमेंट केबे भी हे नाही तो ता पूर्वरु ही ये रिजाइन कर देले आंको घर पछाडू किछि बर्न्ड नोट्स देखिया को मिलथिला and then he resigned okay so parliamentary proceedings on the impeachment motion may continue but his resignation ends his tenure obviously se resign hi kar dele the case raises fresh debate on judicial accountability and reforms the judicial in house inquiry जो माने भी थिबे तांको आउथरे रिन्यूड स्क्रूटिनी फेस करिया को पड़िबो ओके अच्छा आर आंसर दियो मते this is also I think acha our answer diyo consider the following statement the motion to impeach a judge of the Supreme Court of India cannot be rejected by the speaker of the Lok Sabha as per the Judges Inquiry Act 1968 the Constitution of India defines and gives details of what constitutes incapacity and proven misbehavior of the judges of the Supreme Court of India. The details of the process of impeachment are given in the Judges Inquiry Act. If the motion for the impeachment of the judge is taken up for voting, the law requires the motion to be backed by each house of the parliament and supported by a majority of total membership of the house and by not less than 2/3 of the total member of the house present and voting. चारिटा स्टेटमेंट दिया गला चारटा स्टेटमेंट भितरु कोकोटा ठीक कोकोटा भूल ओ Guru Prasad is saying 3 and 4. Smaraki 3 and 4. Good. Satish 3 and 4. Good. Yes. Answer will be 3 and 4. Right? प्रथम जो स्टेटमेंट अच्छी कि इट कैन नॉट बी रिजेक्टेड आई सेड इट कैन बी रिजेक्टेड इट कैन बी एडमिटेड तांका हाथ रे अछि तो ई स्टेटमेंट तो भूल गला सेकंड हला द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन्स एंड गिव्स डिटेल्स जमा भी न खाली एति के डिटेल जिंस लिखा है कि इनकैपेसिटी एंड प्रूवन मिसबिहेवियर जो तुम जज को रिमूव कर दे परिबो बट तार डेफिनेशन तार डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन रे कोठी भी मेंशन करा जाय नहीं तो दिस इज आल्सो रॉन्ग दिस इज आल्सो रॉन्ग थर्ड ऑब्वियसली हम अभी देखिलु कि जजेस इंक्वायरी एक्ट रे पूरा डिटेल दिया है जे हमर इंपीचमेंट प्रोसेस तो दिस इज करेक्ट
आउ ए जिनसटा भी हमें देखिलु कि 2/3 हमको मेजॉरिटी दरकार पास होबा पे ए मोशन टा को ओके सो आंसर विल बी 3 and 4 गुड नेक्स्ट fast breeder nuclear reactor at Kalpakkam takes critical leap forward. What do you mean by critical? ए जगह रे critical माने कौन? Is it a positive step or is it a negative step? It is a positive step. देखो India रो prototype fast breeder in Tamil Nadu Kalpakkam has successfully achieved first criticality माने the start of a controlled fission chain reaction start हैला जोड़ा setup ही थिला जिनसटा वर्तमान start ही जाइछि माने से particular stage तक से reach कर देइछि ताको हमें criticality कहबा जोठी तमरो fission chain reaction ता start हुए तो से पर्यंत ए particular fast breeder reactor reach कर देइछि ओके एटा तमे बेसिक जिंस जानि थिबो यूरेनियम रो तीनटा आइसोटोप बेसिकली हमर थाए मेजर आइसोटोप 238 235 234 ए तीनटा भितरु यूरेनियम 235 ता बहुत एबंडेंटली हम देखिया को पाऊ एंड दैट इज आल्सो फिसाइल इन नेचर फिसाइल माने गोटे जिंसटा को हमें अलगा अलगा आगु भांगी की अलगा जो माइटोसिस हमें कहू डिवीजन ऑफ सेल दैट इज फिजन हला तो यूरेनियम रो को पर्टिकुलर आइसोटोप इज मोर फिसाइल 235 एटम्स ओके बेसी डिटेल जीवा ने हम पाखरे टाइम नहीं वर्तमान ओके एटा ए जिंसटा टिके देखि दिया ओके एनी हाउ यू विल गेट द पीडीएफ डोंट वरी स्टेज 1 हला एटा ए जिंस हम ऑलरेडी पढी छु प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर रे तमरो प्राइवेटाइजेशन भी वर्तमान देखिया को मिलची तेमा इंडिया राइट मन पड़ची तो सेथिरे नेचुरल यूरेनियम तमरो यूज करा जाय हला सेकंड स्टेज हला इंडिया रो तीनटा स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम के डिजाइन करथिले के डेवलप करथिले होमी जहांगीर भाबा सेथिरे स्टेज 1 तमरो थिला प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर ओके जोथरे की तमरो यूरेनियम 235 फिशन है की एनर्जी बाहर करे ऑल्सो यूरेनियम 238 प्लूटोनियम बाहर करे Pu 239 एंड तमरो न्यूक्लियर पावर जनरेट हबो सेकंड हला तमरो एठी से प्लूटोनियम ता आसिला एठी 239 ओके एंड स्टेज 2 परे से प्लूटोनियम ता हमरो हेजे यूरेनियम 233 ओके यूरेनियम जेहेतु बेसी नाही हम पाखरे तो हमरो मेन थिला कि हमें थोरियम रिजर्व ता को यूज करी कि हमें केमिति एनर्जी क्रिएट करि परिबा सो थोरियम पाई हमको पूरा एंटायर प्रोसेस रा को फॉलो करिया को पड़े गोटे हला तमरो नेचुरल यूरेनियम थाए नेचुरल यूरेनियम तमरो नेचुरल यूरेनियम तमरो प्लूटोनियम हे जाय फ्यूजन परे प्लूटोनियम तमरो अगेन यूरेनियम 238 सहित मिसला परे तमरो यूरेनियम 233 हे जाय यूरेनियम 233 फ्यूजन परे जो एनर्जी बाहर देन यू गेट द थोरियम हला थोरियम रो हमें केमती सस्टेनेबल एनर्जी बेसी क्रिएट कर परबा दैट इज द एंटायर मोटो ऑफ दिस 3 स्टेज न्यूक्लियर डेवलपमेंट प्रोग्राम हला तो प्रथम हमरो काम हला प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर रे काम तापर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ही तमरो चेन रिएक्शन वर्तमान देखिया को मिली सारिची देन स्टेप नंबर आसिला थोरियम बेस्ड रिएक्टर्स ओके जे कि तमरो कन्वर्ट करे थोरियम टा को U233 रे मोर एनर्जी क्रिएट करे ओके अच्छा so it is a long term strategy designed to make the country self reliant in the nuclear energy part especially using the abundant thorium reserves okay India lacks large uranium reserves but has vast thorium deposits मु कहली ऑलरेडी कि थोरियम हम पाखरे बहुत अछि यूरेनियम कम अछि तो थोरियम टा को यूज करके हमें केमती न्यूक्लियर एनर्जी बेसी जनरेट करि परिबा ओके तो सेति पे हमको मेन काम हला ए जो टोटल तीनटा स्टेज रे हम डिवाइड करिछो केमिति हम यूरेनियम टा को लिमिटेड यूज करके एफिशिएंटली यूज कर परिबा आउ ग्रेजुअली वी शिफ्ट टू द
थोरियम बेस्ड एनर्जी। ओके इंडिया रे जदि तमे देखिबो 25% ऑफ द ग्लोबल थोरियम तमे देखिया को पाइबो इन द फॉर्म ऑफ मोनाजाइट सैंड्स। ओके ताको फिर अगेन फिल्टर करा जाए। इवन यूरेनियम भी तमे जोटा रॉ पाओ सेरे ही यूज करा जाए नहीं। ओके कोस्टल एरिया से तमे थोरियम रिजर्व्स देखिया को पाओ जेमति कि केरला रे, तमिलनाडु रे, ओडिसा रे, हला आंध्र प्रदेश रे, महाराष्ट्र रे, गुजरात रे जहां भी तमरो कोस्टल एरियाज अछि सेठी हमें ए थोरियम रिजर्व्स कोडा को देखिया को पाओ। ओके झारखंड, वेस्ट बंगाल सेठी भी तमे ए जिनसरा देखिया को पाओ। सो दिस इज द एंटायर प्रोसेस डिस्क्राइब कराई छी। फर्स्ट स्टेज रे कोन हबो हला एथरे तमरो प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर गुडा को सेटअप करा जिवो। नेचुरल यूरेनियम यूज करा जिवो। नेचुरल यूरेनियम तमरो फ्यूजन अंडरग्रो हे कि एनर्जी प्रोड्यूस करिवो। आउ जो यूरेनियम 238 अछि से तमरो कोन करिवो न्यूट्रिएंट्स टाको एब्जॉर्ब करिवो आउ प्लूटोनियम को कन्वर्ट हे छिवो। से प्लूटोनियम ता तने आसीबो हमरो सेकंड स्टेज रे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर रे। से प्लूटोनियम ता सेतिर कोन फ्यूल यूज करा जिवो यूरेनियम प्लूटोनियम मिक्स्ड ऑक्साइड फ्यूल। इट इज अ मिक्स ऑफ दिस प्लूटोनियम जोटा कि हमर ए स्टेज रे बाहर थिला। से प्लूटोनियम टाको हमें यूज करबा यूरेनियम 238 रे हला। प्लूटोनियम ता केमति बाहरला बाय प्रोडक्ट और रेडियो एक्टिव वेस्ट प्रोड्यूस्ड इन द फर्स्ट स्टेज ताको हमें यूरेनियम 238 एटा काहे कि मो डिटेल रे कहूची न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हमर गोटे सिलेबस रे मेंशन अछि तो टिके हमहु जाने को पड़िबो। ओके तो जेतबेले पीडीएफ टा मिलिबो टिके पढि देबो भल से। तापरे सेकंड स्टेज रे P239 तमरो फ्यूल हिसाब रे यूज करा जाय। ओके देन स्टेज 3 रे तमरो U23 जोटा कि तमरो स्टेज 2 रु बाहर। स्टेज 2 रु तमे जदि इठी तमे देखिबो PU239 रु U233 बाहर। U233 रे अगेन फ्यूजन हबो स्टेज 3 रे थोरियम बेस्ड रिएक्टर रे एंड आहुरी मोर एंड मोर U233 बाहरिबो। ओके सो दिस इज द 3 स्टेज प्रोसेस हमरो न्यूक्लियर एनर्जी रो। ओके नेक्स्ट देखिए आईएनएस अरिधमान। तो मन जानथिबो आईएनएस अरिधमान रिसेंटली इंडिया रो नेवल फ्लीट को एंट्री करिछि। एथरे हमरो मन रखिबा कोन ए जिनसरा मन रखिबो अरिधमान रो प्रीवियस दीटा क्लास कोन कोन थिले बहुत फेमस सुनिथिबो। ओके आईएनएस अरिहंत 2016 कमीशन हेतिला आउ आईएनएस अरिघाट आ परे आर थर्ड जनरेशन हमें कहि परबा इज आईएनएस अरिधमान जोटा कि एबे कमीशन करा जायछि। ओके सो एटा हला तमरे थर्ड आ पूर्वरो दीटा ऑलरेडी से टाइप रो सबमरीन्स हमें कमीशन करि सरछु। ओके सो इंडिया कमीशन इट्स थर्ड न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल। फर्स्ट कोटा अरिहंत सेकंड हला अरिघाट। ओके अगेन मु देखौची the 3 अरिहंत क्लास सबमरीन मन रखिबो। फर्स्ट हला अरिहंत हला इंडिया रो प्रथम बैलिस्टिक सबमरीन अरिघाट तापर हला तमरो अरिधमान। तो अरिधमान वर्तमान कमीशन करा जायछि इंडिया थर्ड न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल। अरिहंत हमरो फर्स्ट थिला। अरिधमान इज द एडवांस्ड वर्जन ऑफ द अरिहंत क्लास सबमरीन। ओके आउ एते डिटेल हमें जीवा नाही। एटी देखो मन रखिबो गोटे इंपोर्टेंट इट इज पावर्ड बाय ए 83 मेगावाट प्रेशराइज्ड लाइट वाटर रिएक्टर with enriched uranium. Okay, it can carry up to 24 K-15 सागरिका missiles. सागरिका missile हम मते पढ़िनु पढ़िबा केबे। Okay. So अरिधमान 24 टा K-15 सागरिका मिसाइल कैरी करि पारे with a range of 750 किलोमीटर
आउ at a K4 मिसाइल से कैरी कर पारे with a range of 3500 किलोमीटर or K5 missiles which can be nuclear tipped माने nuclear energy में माने बॉम्ब वगैरह यूज करि परिबा एंड जदि तुम एठी देखिबो these are all your K5 K4 and K15 missile कथा मु जेटा कहूची okay it can carry a greater number of long range nuclear capable K4 missile along with 24 K15 सागरिका missile and K5 missiles so केते बड़ तमे निजे भाबी परथबो okay जेतो आमे न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन कथा कहबा बेसिकली दीटा कैटेगरी अछि मन रखिबो सबमर्सिबल शिप न्यूक्लियर हला आउट हला सबमर्सिबल शिप बैलिस्टिक न्यूक्लियर दीटा डिफरेंट आम पाखरे न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स अछि ओके तो ये जो एसएसएन हला सबमर्सिबल शिप न्यूक्लियर these are nuclear powered fast attack submarines primarily for offensive combat roles हला आ जदि हमें SSBN कथा कहबा these are also nuclear powered submarines equipped with ballistic missile and they can carry nuclear warheads okay तो दी प्रकार मन रखिबा तो ए जो अरिधमान हला अरिहांत हला अरिघाट हला these are submersible ship ballistic nuclear submarines okay अच्छा try to answer this or answer to comment रे कह देबो kindly और पांच छोटा स्लाइड अछि हमें जल्दी जल्दी कवर अप कर देबा ओके आंसर तो मते कमेंट रे कह देबो और आंसर कोन हो नेक्स्ट देखियो हमें Artemis 2 मिशन जानथिबो Artemis 2 मिशन रिसेंटली सक्सेसफुली लॉन्च करिके सब काम हे गलानी ऑलरेडी तो आ विषय टिके पढिबा Artemis 2 टा एक्चुअली कहारो नासा रो along with European Space Agency and other space agencies as well इसरो रे तो नो आई होप एति के हमें जानि छु एथिरे मेनली तमर कोन करा जिवो कि जेमते हमर गगनयान रे हमें ह्यूमन एस्ट्रोनॉट्स जो कोन कहला हमें व्यू मित्र को पठेलु तापर हमें मनुष्य को पठेबा गगनयान रे टू द स्पेस सिमिलर आर्टेमिस रे तमरो जो मून रो साउथ पोल अछि सेठी मैन को पठेबार कार्यक्रम अछि आर्टेमिस मिशन रे आर्टेमिस 1 कोन 2 कोन 3 कोन बेबा देखिबा आर्टेमिस 2 टा वर्तमान चली छी सक्सेसफुली हला तो सेथरे कोन हबो अर्थ रो बाहरी की तमरो जीव सेटा मून रो अगेन रिटर्न आसीबो अर्थ को एंड एथरे तमरो एस्ट्रोनॉट्स रही थिबे हला तो एंटायरली जदि हमें देखिबो प्रथम स्टेज हला लिफ्ट ऑफ हला द स्पेस लॉन्च सिस्टम ब्लास्ट ऑफ फ्रॉम द केनेडी स्पेस सेंटर इन फ्लोरिडा सेठो तमरो एस्ट्रोनॉट्स माने ता भीतर थिबे स्पेसक्राफ्ट रे एंड दे विल ऑर्बिट द अर्थ फॉर अ डे गोटे दिन से माने अर्थ रो ऑर्बिट लगेबे सब ठीक ठाक अछि कि नै से जिंस रो से माने जज करिवे एंड डे 2 रो डे 5 से माने ट्रैवल करिवे टुवर्ड्स द मून रे पहुंचला परे ओके ओरियन होची से स्पेसक्राफ्ट रो ना जोथरे से माने जाउछन बाय द वे डे 4 रे और डे 6 रे से माने ओरियन विल रीच इट्स farthest point from the earth sailing 5000 miles beyond the moon astronauts will capture the flyby with cameras and smartphone देखिबे सब ठीक ठाक अछि कि नै ओके एंड देन मून और अर्थ रो ग्रेविटी रे जोगु दे विल अगेन कम बैक टू द अर्थ एठी आ तांको पीछे प्रोपल्शन दरकार पड़िबनी अर्थ को वापस आसे पे ग्रेविटी विल हेल्प देम टू ब्रिंग देम टू द अर्थ तो फ्यूचर प्लानिंग कोन अछि तमे आगो देखि दियो आर्टेमिस 1 कोन थिला आर्टेमिस 1 कोन थिला uncrewed test flight of the Orion spacecraft नाटा निहाती मन रखिबो एतरे ही टोटल मिशन ता पूरा कंक्लूड करा जाउ छी uncrewed माने के लोक जिबेनी खाली स्पेसक्राफ्ट ता को मून को पठा जिवो जोटा कि सक्सेसफुल हेतिला 2022 रे आर्टेमिस 2 जोटा वर्तमान चली छी सेथरे तमरो एस्ट्रोनॉट्स को पठा जिवो बट से माने लैंड करिबेनी
से माने अगेन रिटर्न आसी जिवे देखिबे सब केमती माने एटमॉस्फेयर केमती सब रहउची आर्टेमिस 3 जोड़ा कि प्लान करा हेछि नेक्स्ट ईयर 2027 रे सेथरे तमरो डॉकिंग हबो माने से स्पेसक्राफ्ट जाई कि तमरो सेठी डॉकिंग हबो lunar साउथ पोल मून रो साउथ पोल रे एंड तमरो सेठी कोन हबो 2028 रे डॉकिंग हैला 2027 रे डॉकिंग हैला परे 2028 रे एस्ट्रोनॉट्स माने जाई कि सेठी लैंड करबे दैट विल बी आर्टेमिस 4 सो दिस इज द ए मिशन रो सीरीज पूरा ओके सो बाय 2028 एटा प्लान करा जाई छी सो लेट्स सी कोन सब होची ओके इट इज अ 10-day long lunar crewed mission artemis 2 रे मनीष जाउछन्ते एस्ट्रोनॉट्स जाउछन्ते लैंड करबेनी जाई कि बस पळे आसबे हला they will just fly around the moon and return back to the earth without landing main हला ओरियन रो लाइफ सपोर्ट सिस्टम टाको टेस्ट करा जिवो एंड देखा जिवो will it be capable of supporting astronauts to live and work in deep space जोटा कि हमरो फ्यूचर टारगेट्स गुडा को अछि आइजमान क्वेश्चन अच्छा हो एटा सॉरी जाऊ आजमान क्वेश्चन हम देख दवा नेक्स्ट देखो lunar free रिटर्न ट्रैजेक्टरी हला देन ताके कोन करबे फ्री रिटर्न ट्रैजेक्टरी हला एटा माने जोठी तांको आउ किछि प्रोपल्शन सेठी दरकार पड़िबो नाही से माने तमरो फ्री ट्रैजेक्टरी मोशन यूज करिकी ग्रेविटी यूज करिकी से माने आसी जिवे अर्थ को ओके इट विल बी द सेकंड फ्लाइट ऑफ द स्पेस लॉन्च सिस्टम the first crewed mission of the Orion spacecraft रो प्रथम crewed माने crew जाउची कि इस spacecraft रे प्रथम crewed mission and the first crewed mission beyond low earth orbit since Apollo 17 in 1972 Apollo जानथिबो 1972 परे एटा प्रथम तमरो crewed mission तमे देखिया को पाउछ ओके beyond the low earth orbit अच्छा ठीक अछि ए क्वेश्चन को जिबा ता पूर्वरु हम ए क्वेश्चन ता डिस्कशन कर दबा कोन कहले सब आंसर देखिबा all of them are correct 2 and 3 only अच्छा कौन अछि क्वेश्चन ship submersible nuclear submarines are primarily designed for tactical attack roles such as anti submarine warfare ship submersible ballistic nuclear submarines form the sea-based leg of the nuclear triad. INS Aridman is equipped with ballistic missile capable of carrying nuclear warheads. एटा तो anyhow ठीक है ना एटा तो anyhow ठीक बाकी एक टू all of them are correct. Smaraki is saying 2 and 3. 3 तो is anyhow correct. Yes. Okay. Good. Ship हम कहलु दी प्रकार हमरो अछि SSN अछि SSBN अछि SSN रो काम हला tactical attack roles हला such as anti submarine warfare एठी तुमको मैं ऑलरेडी कहली कि एसएसएन रो काम कोन हला ऑफेंसिव कॉम्बैट रोल हला such as the anti submarine warfare anti surface warfare तो से माने कोन डिफेंस पाई काम करिवे बेसिकली ओके एंड सेथरे तमरो क्रूज मिसाइल यूज करा जाय टॉर्पेडोज यूज करा जाय whereas आर ऑपोजिट रे हमें देखिबा बैलिस्टिक यूज करा जाय सेति की ही एति डिफरेंस जेमते हमें पढिथिलु बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल रो डिफरेंस तो एठी तमे मन रखिबो एसएसएन रे बेसिकली क्रूज मिसाइल यूज करा जाय टैक्टिकल अटैक रोल पे सच एज द एंटी सबमरीन वॉरफेयर आउ एसएसबीएन रे तमरो सी बेस्ड लेग द न्यूक्लियर ट्रायड बेसिकली तमरो न्यूक्लियर वॉरहेड्स गुडा हमें एठी यूज करबा एसएसबीएन रे अरिहांत अरिघाट अरिजमान ए सब हमरो एसएसबीएन अंडर रे आसंती so this is also correct and this is anyhow correct okay so all the statements will be correct 1 2 and 3 all are correct okay next देखिबा आर क्वेश्चन रो आंसर दे दियो आर्टेमिस 2 रो बाय द वे एटा मु तुमको कहिलेनी इट इज अ जॉइंट मिशन
नासा रो खाली नुह नासा along with the European Space Agency and the JAXA Japan European Space Agency and the Canadian Space Agency एमानकर joint mission एटा गोटे series of mission, okay, to send the astronauts to the lunar south pole and eventually establish a permanent presence, गोटे base से माने केमती बनेबे मून रे आ मून टाको केमती गोटे लॉन्च पैड यूज करि परिबे टू गो टू मार्स, मून रो तमे मार्स को जाई परिबो, दैट विल बी मोर इजी। सो ए जिंसटा करा जिवो हला। सो दिस वाज ऑल अबाउट आर्टेमिस एंड ट्राई टू आंसर दिस, एटा थिला तमरो लास्ट, देन हमें क्लोज कर दबा और आंसर टा दे दियो। Yes, answer will be 1, 3 and 4. Okay, good. Prathama statement, it is the first crewed mission of the Orion spacecraft and the second flight of the space launch system. Prathama thara crewed, mane crew jaichi, prathama thara pe Orion spacecraft re, so that is correct. The mission involves landing astronauts near the lunar south pole, that is also correct. That is wrong. Why? Because landing nahi खाली जाएगी आसीबे, लैंडिंग परे आर्टेमिस 4 रे सेटा करिवे लैंडिंग, वर्तमान खाली जाएगी आसीबे, तो स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। थर्ड हैला द स्पेसक्राफ्ट विल फॉलो ए फ्री रिटर्न ट्रैजेक्टरी, माने तांको सेठी मून पाखरा प्रोपल्शन दरकार पड़िबनी, फ्री रिटर्न ट्रैजेक्टरी यूज करिकि से माने रिटर्न जर्नी कर देबे टुवर्ड्स द अर्थ। सो दिस इज करेक्ट। इट विल बी द फर्स्ट क्रूड मिशन बियॉन्ड द लो अर्थ ऑर्बिट since Apollo 17 in 1972, era में देखिलु exact statement, this is also correct. So 1, 3 and 4 is correct. एटा भूल से माने लैंडिंग करिवे नहीं, only बुली के आसीबे। Okay, fine. So this was all about current affairs of April 1 to 19, major news ही हमें discussion करछु। Okay, thank you everyone. Thank you. Good night. देखा नेक्स्ट क्लास रे। बाय।